Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a lesson of class 9th English, the scent of gutters. This is from prose section and this is written by Professor Nirja Muttu. Dear students, as you know, we have delivered so many classes till date, and today we are going to learn about this very lesson. What does the saint of gutters mean? You know, saint means a holy person. A holy person, और जिसको हम उर्दू में बुजुर्ग भी कहते हैं. Gutters means it is a small canal, or we can a dirt canal or mud. Dirty canal, जो गंदी नाली होती है उसको गटर्स कहा जाता है. तो what does this scent of gutters mean? प्यारे बच्चों, आपने दुनिया में बहुत सारी शख्सियत का नाम सुना होगा. उनमें एक शख्सियत है, उसका नाम है मदर टेरेसा. तो मदर टेरेसा जो थी, मदर टेरेसा को ही सेंट ऑफ गटर्स कहा गया है. बट वाई, क्यों उसको सेंट ऑफ गटर्स कहा गया है? उसको इसलिए सेंट ऑफ गटर्स कहा गया है क्योंकि इसने मदर टेरेसा ने गरीबों, यतीमों, बीमारों की बहुत मदद की है. जो लोग गंदी नालियों में बीमार होते थे, इनको चूहे खाते थे, वो वहां मर रहे थे, तो इनका उन्होंने हमेशा ही मदद किया. तो इसीलिए उसको सेंट ऑफ गटर्स कहा जाता है. यानी ये उन लोगों का मसीहा है जो नालियों में पड़ते थे, जो जरूरतमंद थे, जो गरीब थे, जिनके पास न कपड़े थे न मकान थे. तो इसीलिए उसको सेंट ऑफ गटर्स कहा जाता है. This is written by Professor Nirja Muttu. I will give you a brief introduction of Nirja Muttu. Professor Nirja Muttu did her MA in English from Kashmir University in 1958. She became professor and principal in 1981 in Government College for Women, MA Road, Srinagar, from where she had graduated in 1956. She stayed in the same college till her retirement in 1995. She was awarded a visitorship by the British Council in order to research in the Oxford University in 1984. She was also awarded a senior fellowship in the literature by the Ministry of Human Resource Development, Government of India in 1998 to work on 4 Kashmiri women poets. Her publications means her works include Kashmir, Jammu and Ladakh, A Trifle Land. The second book, The Strange Beside Me, translation of Kashmiri short stories in English, contemporary Kashmiri short stories. और एक बुक साल, A Feast of Kashmiri Cooking. Nirja Muttu lives in Srinagar with her husband. Now, dear students, you know about Professor Nirja Muttu. Now we will see what is the theme of this saint of gutters. Dear students, how many of us are willing to devote our life for the betterment of the poor and the needy? How many among you, how many among we people are ready to help the poor? Yes, you should say we are all ready to help the near and the poor people. That this true worship lies in the service of mankind. When we will serve the mankind, that is the true service to God. We have not been created here to eat and see it, but we have been brought in this world to help others. आना है दूसरों के काम, है दुनिया में वही अच्छे,
आते हैं काम दूसरों के, जो दूसरों के काम आते हैं वही लोग अच्छे होते हैं। चलो लेट अस गो टू द टेक्स्ट। यू विल ओपन योर बुक एट पेज नंबर 19. One of the greatest figures of the 20th century is a woman known all over the world as Mother Teresa. She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. One of the greatest figures of the 20th century. One of the जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी शख्सियत है, तो वो एक खातून थी जिसको दुनिया में, पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसका नाम क्या था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। वो गर्चे वो उसके पास कोई वो सियासत में नहीं थी, यानी सियासी लिहाज से उसके पास या गवर्नमेंट या हुकूमत में वो नहीं थी, लेकिन बट शी इज रूलिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उसने दुनिया के लोगों के दिलों पर राज किया है। एंड she was awarded the highest honors by a grateful world, including the